Yes, welcome everyone. Walaikum assalam, sir. All right, so I was hoping to get some more participants today. Let's see if anyone else joins in, because today we are going to talk about some very interesting concepts that will form the foundation of this course. And also there are very fundamental concepts that are necessary for anyone who wishes to know something about research methods and research itself. Before I start my discussion, I would also like to recall that if this class would be based on class discussions and class participation, so I would encourage you all to participate as much as you can. So let's just start by talking about the concepts that I was talking about earlier today. And there are four concepts. Some of you must be already familiar with these terms, but for some of you, these might be a bit new. So let me just share my whiteboard and write out these terms over here. Okay, so the four terms are okay, these are the four terms. Now, I would like you to participate, and if you are already familiar with these terms, tell us what you know about these terms. If you are coming across these terms for the first time, then also let us know that these are new terms. So please comment on these terms. Okay, so मैं जी बिल्कुल, sure. जी तो सर इनमें तीन चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया ontology, epistemology और methodology. Basically, ontology is about we have some things exist, right? Anything that is in the form. So basically, we study about that matter, that thing, like how it exists. Like if there are two things, then how they are related, and how they are into being, and how there's like um, I can say I have this. I took this class last semester where I studied web semantic webs. So we created the ontologies for web applications. So what we did is that we chose a topic, for example, some kind of like topic of traveling. Then we created some subjects, and their subjects, objects, things like that, and we created relationship among them. So basically, that was ontology. Ontology tells us like how things are interconnected and how they are interexist. Epistemology basically gives us information about what we already know. Like we have the knowledge, but we don't know like this how this knowledge is formed. Like there must be some factors behind it, and basically information about the data. We can say that. So basically, epistemology gives us the theory of how things are exist, and methodology is basically the abstract level of methods, like how if we are doing some research or anything, and we have some methods, right? So how those methods are formed and how they are going to work, that's our methodology tells us. So yeah. Axiology का मुझे भी idea नहीं. Thank you, Asad. अपने हमारी discussion start की और अपना point of view express किया. I would like to now invite other participants to either comment on what Asad has said or say add to what Asad has said. Sir, I would like to add. Sure. I would say that ontology is हमारी kind of representation of knowledge होती है जिसके अंदर हमारे पास
डोमेन होती है, रेंज होती है, और उस पर जो है हमारे पास रिलेशन होता है, और हम एक नॉलेज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मेरा ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हम एपिस्टेमोलॉजी पे आ जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है कि जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज के, अगर जो नॉलेज है तो वो उसको जस्टिफाई करना, उसको एवेल्युएट करना नॉलेज को। फिर मेथडोलॉजी, तो मेथडोलॉजी हमारे पास जो है जस्टिफिकेशन देता है मेथड की। मेथड को खुद डिफाइन नहीं करता, बट मेथड की जस्टिफिकेशन देता है, उसको एवेल्युएट करता है, तो वो मेथडोलॉजी। बाकी एक्सियोलॉजी का मुझे नहीं पता। Very good points, Mehak, especially about methodology, for example. And anything about axiology? नो सर, एक्सियोलॉजी का आइडिया नहीं है मुझे। Okay, that's great. Good participation. Thank you, Mehak, for that. Ji, If I may. sure, please. सर तो ontology आई थिंक बाय डेफिनेशन में सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन इन डेफिनेशन इज वेरी फिलोसॉफिकल, और इट टॉक्स अबाउट हाउ रियलिटीज एग्जिस्ट और उनके कनेक्शंस और उनकी नेचर। एपिस्टेमोलॉजी इज अबाउट स्टडिंग नॉलेज, और नॉलेज को इंटरप्रेट कैसे करना है। हो सकता है डिफरेंट पीपल टेंड टू डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग नॉलेज, तो वो स्टडी है। एक्सियोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, and from what I studied about methodology is that it is the process of deciding what methods you are going to pick or choose. So this is a study about methods. Yeah, very good study about methods. That's also very good. Ji, Ibrahim. Yeah, basically every term mentioned here is related to philosophical. So these are all like philosophy. Everyone can have a different definition for them. Besides that, I just googled what is axiology, and it's like a study of value, how we can name, like how can we study how things value, or how this is a science of studying the values. जी बिल्कुल सही है। आपने इसको मालूम किया, ये डेफिनेशन सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम अब इनको अपनी लैंग्वेज, अब यानी कि अपना जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव रेड राइट फ्रॉम हियर और देयर. So after listening to these and after maybe using our own previous experience के अच्छा हमने previous course में ये करा था, हमारी जो अपनी understanding है उसको आप किस तरह से express करेंगे? यानी if you like have any questions, like you can also say मुझे अभी confusion है इस चीज के बारे में या something. लेकिन अगर आपके बारे में आपके पास अपनी कोई understanding है, your own very personal understanding, नहीं, I'm not looking for what you have read somewhere or what you know about it. So reading about something is one thing, and having your own internal understanding, conception, perception of that thing is another. So I'm looking for that internal understanding, your own perspective कि ये क्या चीज है और क्या इसका फायदा होता है, क्यों हम पढ़ते हैं इसे, क्या ये, all this. सर मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग है, बेसिकली हमें ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्यों चाहिए, सही है। सो आई थिंक हम रिसर्च इज अबाउट डिगिंग डीप, राइट। मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी अननोन चीज़ या इवन एग्जिस्टिंग चीज़ के बारे में रीजनिंग भी कर रहे हैं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हम जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं या जो जिस चीज़ की बेसिकली हम रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे क्या चीज़ें हैं लाइक जो उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हमने किसी तरह का डेटा बस कलेक्ट करा और कुछ मेथड्स बनाए और उसके बाद जो है उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली रिसर्च का पर्पज ये है, तो हमें सारे इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है हमें पता हो वो किस तरह से हमारे बाकी पैरामीटर से, वैल्यूज से कनेक्टेड है, और फिर किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली फिलोसफी का टर्म भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी, इट्स मोर अबाउट
फिलोसफी के हम अपनी सब्जेक्ट की फिलोसफी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और मेथडोलॉजी आई थिंक इज वेरी क्लियर थिंग कि अगर हम कोई चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या स्टेप्स होंगे और हम जो जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मेथड्स को फॉलो करेंगे, वो बेसिकली किस तरह से कोरिलेट करेंगे, किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। तो मेथडोलॉजी इज लाइक अ प्रोसेस, डिफाइनिंग अ प्रोसेस बिफोर डूइंग दैट। सो आई थिंक ये चीज़ इस तरह से। Right. So again, you took the initiative in describing your own conception of these things. Yes, anyone else? I mean, I want to make myself clear about क्या हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभी तक जो चीज़ें मैंने सुनी है उसमें मुझे अभी तक कंफ्यूजन है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो I want you to help me in removing these confusion, like हम सब मिलके ये काम करना चाहते हैं। तो जी, anyone else? अरीज, आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। तंजीला, what do you think about these 4 terms? Sir, these terms are fairly new for me. So I was just listening to what others were pitching and what I've read recently after the last class about these terms. Already a lot of people have expressed what I already know about these terms. I can just repeat what I just know about them. Ontology, I know what I know about ontology would be it's a study of nature of being. So I don't really know much about that. Epistemology, I read the articles obviously, so got a little bit of idea about epistemology and its relation to axiology somehow. But I guess it would, be more clear for me when we will discuss it further, probably. Right. Obviously, it's not directly related, but in some sense, it may have some relation between maybe axiology can be epistemology in some situations, and the concept that I have of epistemology on very basic level would be the knowledge, the theory of knowledge, or how we achieve it, and different concepts within it. Like other than that, there was a discussion that I was reading about methodology as well, that it can lead to different outcomes of the same research. For example, if we are researching on a similar topic and you choose a different methodology and I choose a different methodology, and we have a very strong opinion about them, we might come out with a different outcome in each kind of methodology that we choose. And obviously I had a confusion about methods and methodologies, but now I think I can just explain that. Basically, methods would be what we use, the tools that we use in research, and methodology would be the justification on why we are using that for a particular topic. Mm-hmm. So Right. that's a very basic understanding of all these terms that I have. Very good. You have made very good points. ठीक है, we'll probably come back to them. जी, तंजीला, आप contribute कर। Sir, all these 4 terms other than methodology, the 3 terms are new to me as well. I did get a little bit about ontology from what others spoke, so I think I know it's a bit about relationships between categories and between subjects, but I think that's all I could grasp. Methodology, I think that has to do with the methods, system of the methods on a particular subject or a particular area. And other than that, I think, sir, you're going to explain this better. An interesting contribution, Tanzila. I think Afan, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। जी सर, बस इसी इंतजार कर रहा था कि बेसिकली मुझे 4 out of 3 terms का आइडिया नहीं, but I do have some idea about methodology, so I would like to contribute towards that. So
फॉर्मिंग मेथोडोलॉजी इज लाइक स्टेप ऑफ मेथड्स, जैसे कि अरीज ने कंट्रीब्यूट किया था, तो उसी से मैं एग्री करता हूँ कि मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि मेथोडोलॉजी जो होती हैं वो सीरीज ऑफ मेथड्स होते हैं कि जिसको आप फॉलो करते हैं टूवर्ड्स टू रीच टूवर्ड्स पर्टिकुलर आउटकम. अब ऑब्वियसली हो सकता है कि जैसे कोई एक आउटकम होता है तो उसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि उस मेथड उस आउटकम के अंदर किस तरीके से पहुंचा जाए. तो हम ऑब्वियसली डिफरेंट मेथड्स के जरिए वहां पे पहुंच सकते हैं, या कुछ ऐसे भी होता है कि हमें सिर्फ एक सीरीज ऑफ मेथड्स, एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ मेथड्स फॉलो करके हम उस आउटकम को पहुंचे. तो वो हमारी मेथोडोलॉजी के अंदर आती है कि हम कौन से मेथड्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो हमें किस आउटकम पे आउटकम प्रोड्यूस करें. बाकी 3 टर्म्स का मुझे इतना आइडिया नहीं, तो वही आई वाज लिसनिंग टू अदर्स व्हाट दे वर पिचिंग ऑन दैट. Okay, very good. So you have some idea about methodology, and Yes. okay, so this brings us to, I think, our next question, or my next question to all of you. If I ask you point blank, like, what is your ontology? तो उसका आप क्या जवाब देंगे? It's a question to all of you individually, ठीक है? Taha, Rij, Sir, can Ibrahim, you repeat? Asad, Afan, Mehek, Yeah, sir. Zila, Can you Rabia. repeat it? Question is, what is your ontology? It Can you sounds a bit. explain the term ontology before we proceed to this question? I'm still unclear with the meaning of it. Hmm, Uh, right. Sir, I think it's like yeah, ontology is like defining the concept. So I am a person. So it's like I will define myself like I'm a human being, and I'm a person. So and I will define the relationships with me, that like I have certain things that are related to me, that I have friends, I have families. So it's like it's a concept that defines me and the properties that I am associated with. Very good. नहीं, अच्छा answer है. Uh, Before I comment on this, any other answers for this question? Fayaz, जी yeah. सर, जी. जैसे इन्होंने बताया कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो रिलेशनशिप हैं इसके अंदर, जैसे मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि रिलेशंस इस तरह से कि हमारी एजुकेशन कैसी है. एजुकेशन है तो एजुकेशन के अंदर और फिर सब पार्ट्स हो जाते हैं कि एजुकेशन कौन सी है, और फिर उसके अंदर डिटेल चले जाते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, इस तरह से उन्होंने बताया. तो मतलब ये लिंक होता जाता है और जो है मतलब एक काइंड ऑफ ग्राफ बनता जाता है इससे, प्रॉपर्टीज और Sorry, मैं मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स मिस, का. आपका initial part मिस कर दिया. Can you again tell me what you're saying about? सिंह के उन्होंने जो बात की, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने जैसे रिलेशन को डिफाइन किया कि मतलब उसके रिलेशंस हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे, तो रिलेशन एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी. जैसे एजुकेशन क्या है तो एजुकेशन, और फिर हमारे पास कौन कौन सी और इसके अंदर एजुकेशन है तो हम लोग इसके अंदर सब पार्ट्स ऐड करते हुए जाते हैं. तो इस तरह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे डिफाइन कर देते हैं. Right. Okay. Thank you, Mehek, for this. And there's also a comment by Rabia. जी, मेरा question असल में is not what is ontology. My question is, what is your ontology? Sir, can you explain what is ontology? Right. So I'll explain that. अभी मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप ये बस, it's in English. This question is in English, right? And you sort of understand what does it mean. क्योंकि अभी हमने काफी 15-20 मिनट लगाए हैं ontology को discuss कर, ठीक है? So Sir, based on my that, ontology is my ontology is like I am a human and my name is Ibrahim. okay, I that's think your it ontology, defines. right? और महक ने उसमें कुछ ऐड किया था, I think, about education. महक, दोबारा से आप please, I'm sorry, I'm asking you to repeat yourself again. What did you add? I added for the relation of education, like अगर मैं अपनी ontology define करूँ तो I'm a person, I'm a human being, my name is Mehek, I am मतलब I am a MSc as a student, तो इस तरह से मैं different relations बता सकती हूँ उसमें. Right. और सर इसमें एक चीज और है कि जैसे अभी हम जो भी ऐसे इब्राहिम और मैक ने बात करी, तो आई थिंक आई टोटली एग्री विद दैट. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो वी कैन से दैट दे आर नॉट जस्ट रिलेशनल बट
we can say static properties. So maybe I have hands, like I'm a person, and I have features like my legs, my hands, and everything that I possess within myself. So that can be a part of ontology as well. So Right. like some person can have disabilities as well. So maybe they can only one hand, right? So that also come under ontology. All right. नहीं बिल्कुल सही है। तो तीन रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास, और उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे अपना सवाल थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। And like Tanzila pointed out, the question is not clear itself. But again, based on this unclear question, let's go ahead and find answers, find what others have to like say as an answer to this question. So Taha, Arij, Afan, Tanzila has said that she wants to know more about the question, and Rabia. What would be your response to this question? And I'll change this question in the next round. But what is your response to this question? The question is, what is your ontology? Yeah, I think my answer would be similar, that my ontology is like I'm a human being, and then Right. I'll be defined as a female. So I think Okay. defining or categorizing yourself at a very fundamental level All right. would be, yeah. Okay. So probably the rest of you would answer in a similar fashion, in a similar way, in that, right? If you have a different answer, please let me know. But I'm sort of assuming that most of you are responding in a similar fashion. So what you are responding to is a question. I probably can rephrase it as a question as who am I, right? So maybe you are responding to this question. Or if you ask yourself, who am I? Then you respond, okay, I'm a human being and I have these properties and relationships. जी ताहा, अब आप कुछ कहना चाहें? जी सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि क्योंकि आपने सवाल ये पूछा कि आपकी ओंटोलॉजी क्या है, तो उस पे मैं एक फिलोसॉफिकल एक्सियम यूज करूंगा कि आई थिंक हेंस आई एम। मेरी जो नॉलेज बेस है, मेरे जो परसेप्शंस हैं, मैं रियलिटी को कैसे परसीव करता हूँ, वो भी मेरी एक रियलिटी है। तो आई वुड ऐड दैट एज वेल टू माय Right, very good. That's also a good response. So you have tied it up with your knowledge, your Yes. entity, your existence with your knowledge. Okay, so let me now change my question a little bit, because I actually intended to ask a different question, but I put it this way. So जो आपने respond किया, obviously very good contributions from all of you, and in the right direction. The next question, or the modified question, is that what is your ontological perspective? Sir, again, the question is a bit tricky. Are we talking about like what perception we have about ontologies, or we are talking about our own ontologist perspective? Like, I'm still not clear about it. Okay, so यहाँ पे confusion create होगी जी, और किसके सहन में confusion create हुई है? Okay, Tanzila has pointed out right from the beginning that these questions are quite confusing and maybe not well defined. Ji, Reach. Sir, I think the concept itself is not very clear for us, at least. Like for me, ontology is a fairly new term for me. So whatever I've heard is like what I understood from everything. The discussion was that the features, the characteristics of a person like me. That's what they were answering. They were telling that they're whatever gender, their work or whatever. But what another thing that can be there, maybe I would be wrong, but there was this concept, realism. So
about that. So it could be also a part of what's of it, like not just the internal characteristics, but the social status, maybe the external, the relationships of that person, of like my relationship with people, and that affects whatever other characteristics I may have. So maybe that could also be a part of the ontology of a person. Right, very good, Or very good addition. As Taha said, that the ideas that we have and how we create knowledge or something like that could also be added to all these three. Maybe it's a amalgamation of all these concepts, but I'm not really clear on, like, I cannot just pinpoint that, yes, this is my ontology. Right. Okay, great. You added a new term also here, which we'll find very useful later on as well, about realism. Okay, तो मेरा next question जो है वो मैं आप लोगों से again सबसे करूँगा one by one, लेकिन इस question का interestingly मुझे पहले से मालूम है कि आप सब लोग क्या आंसर देंगे. I already know your answer, ठीक है, but I'll still ask this question anyway. Okay, so the question is, okay, if you are not looking at the moon at this moment, do you believe the moon is still there? Yes. 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 तो वो मुझे मालूम था पहले से आप सब लोग yes कहेंगे. Anyone who says no? Yeah. जी महक आप कह रही है no? Yes. नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा, बट मैं इसमें कहूँगी कि अगर हम एट द मोमेंट की बात करें तो एट द मोमेंट मून नहीं है, बट जनरली उसके जो आवर्स होंगे उसमें वो एग्जिस्ट करता है. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि you're not looking at moon right now, ठीक है? Do you believe that moon is still out there? आसमान में है, अपनी जगह पे कायम? जी सर. Yes. Okay. Anyone who's saying कि नहीं वो नहीं है वहाँ पे इस वक्त? सर बेसिकली एक जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा है इस चीज से रिलेटेड सर. अगर बेसिकली हम ये जो अगर बात कर रहे हैं कि हमें दिख नहीं रही एक चीज, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो स्टिल एग्जिस्ट करती है. I think we are saying this out of our conscience, like as a human being, we understand this thing, right? अगर मैं इसको as a computer की फॉर्म में बात करूं तो कंप्यूटर है, या तो बेसिकली वो रूल्स की बेस के ऊपर, लॉजिक की बेस के ऊपर बात करते हैं. तो मतलब अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, डेफिनेटली इफ वी हैव सम काइंड ऑफ अ नॉलेज बेस, राइट? अगर मेरे नॉलेज बेस के अंदर मुझे ये नहीं पता कि मून बेसिकली किसी आवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ये बात नहीं पता सकती कि वो अगर मुझे नहीं दिख रहा तो वो एग्जिस्ट भी करता है. तो आई थिंक इट कम्स ऑन टू दी नॉलेज बेस के माई नॉलेज बेस क्या है. तो एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली हमें पता है सारी चीजें, तो हम ये कह सकते हैं. नहीं, मैं आपकी नॉलेज बेस के लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं देखिए नॉलेज के बेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी मैं सिर्फ ओंटोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉलेज बेस की हम बात करेंगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एपिस्टेमोलॉजी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओंटोलॉजी राइट नाउ. और ओंटोलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो सिंपली ये है, मेरा क्वेश्चन जो था जिसका आंसर आप लोगों ने यस में दिया मोस्टली, मेरा आंसर क्वेश्चन ये था कि डू यू बिलीव राइट नाउ, जो भी टाइम हुआ इस वक्त आपके पास, ठीक है, डू यू बिलीव राइट नाउ द मून इज स्टिल अप देयर इन द स्काई इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी. ठीक है, यू बिलीव के, तो आपको कि कैसे यकीन है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है? ये मुझे इसकी वो रीजंस बताएं आप कि व्हाई डू यू बिलीव कि वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है. What are your logical reasons for believing this? Because I think, sir, हम ये सारी चीजें as from the beginning पढ़ चुके हैं कि how I think from the beginning हम ये सारी चीजें बहुत logically बहुत पढ़ चुके हैं कि हमारे बचपन से हमारे दिमाग में बता दी गई that there's a sun, there's a moon, there are multiple planets that revolve the orbit system. So we're pretty sure, we pretty obviously know that the moon exists. Just because we can't see it right now doesn't mean it's not there. अच्छा चले देखिए, आपने ये कहा कि हमें बचपन से ये बताया गया, ठीक है. Let's go back
1,000 years in a society जहाँ पे बच्चों को शुरू से बताया जाता था कि पहाड़ के ऊपर एक जिन रहता है, ठीक है, द बिलीव्ड कि वहाँ पे जिन है, बिकॉज बचपन से शुरू से हर किसी ने बताया था कि पहाड़ के ऊपर एक जिन। तो डू यू थिंक दैट्स अ लॉजिकल इनफ रीजन टू बिलीव कि वाकई पहाड़ पे एक जिन है, क्योंकि बचपन से ही बताया गया उसे? फिर बचपन में हम बिलीव कर लेते थे because initially we really thought कि yeah that's how it is, but eventually obviously as we grew up we realized it was just for the sake of the fact कि हम टाइम पर सो जाएं, हम खाना खा लें, so obviously we evolve with तो आप time. वो चीजें बिलीव करती हैं जो बचपन में आपको बताई गई थी, उसको तो उसके लिए एक स्टोरी तो नरेट करते थे ना कि वहां पे ये फलाना बंदा गया था पहाड़ के ऊपर, वो नहीं मिला, तो इस तरीके से दे कंस्टिट्यूट अ होल स्टोरी अबाउट इट एंड देन वी बिलीव इट ना कि हाँ फिर पहाड़ के मेरा ऊपर भी होगा। क्वेश्चन यही है कि डज इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ अबाउट इट, और उसकी अपनी एग्जिस्टेंस अपनी है? सर यार एक उसकी एग्जिस्टेंस There is a, yeah, the story is the belief Sir- plus scientific reasoning to it. और साइंटिफिक रीजनिंग है उसके पीछे, ऑलराइट, so it's not just a story, ठीक है, so there's some science एक्सपीरियंस, सर इसमें एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है। क्या अगर आपने कोई एक्सपीरियंस चीज आपका इन्वॉल्व है? आप गए हैं कभी चांद पे? सर बेसिकली नहीं सर डेफिनेटली, फिर लेकिन क्या दूसरे लोग एक्सपीरियंस गए, तो आपका? पॉइंट इसके सर दूसरे लोग गए और आप दूसरे लोगों की बातों पर यकीन करते हैं? सर डेफिनेटली आपका अपना हाउ डू यू बिलीव कि मून एग्जिस्ट करता है? मुझे अब लॉजिकल रीजन कि मून एग्जिस्ट करता है, क्या आप देख रहे हो या ना देख रहे हो, चलिए फॉरगेट अबाउट देख रहे हैं या नहीं देख रहे, व्हाई डू यू बिलीव मून एग्जिस्ट? आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है? Sir, because we see every day and we तो observe that हो it सकता goes है कोई down, वो comes बहुत back. एडवांस किस्म की वर्चुअल रियलिटी हो जो आपको दिखा रही है ये। हाँ, लेकिन we don't believe in the हो virtual सकता है कोई reality at the ऑप्टिकल moment. इल्यूजन हो ये हमारी, मतलब देखते हैं तो हो सकता है कि ये मून नहीं है, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। हाउ डू वी नो इट्स Yeah, नॉट but एन ऑप्टिकल? we can, whatever we have observed in our lives, like the knowledge we have and that we observe daily, so us hisab se we don't think that the virtual reality exists. It can be, if we think about it. There's also a concept that maybe we're just inside a consciousness of some being, and it's also similar to that. You can just imagine that it might be the possibility this can be a discussion, but when we're talking about ourselves, so we can say that, like, I know that I see the moon every night, and some nights it's not there, but every night it's there. Like, it has its own cycle, and from the years that we've looked at it, it has, it changes its sizes and stuff. So I have some observation about it. Plus the things we learn through our surroundings, like whatever we've studied, and that somehow made our beliefs more, like you said about the jinn जो पहाड़ पे था, that jinn, people might not stop believing when they grow up, because they have logical reasoning behind it, like it's not possible and it's just a folklore or whatever. But here we had some logical reasonings that backed up our beliefs that we saw or learned from our childhood. चलिए, चाइल्डहुड से यानी कि आप बहुत साइंटिफिक थी जी? आप यानी कि चाइल्डहुड से ही बहुत साइंटिफिक थी? नहीं, I was just adding up to what Anzila said when you gave this example when she said that this is her childhood, like we were told from bachpan se, lekin I was talking about the observations that we have plus the belief. So you really believe कि moon exist करता है? पहले मैं simple answer दें, yes or no? Yes. Yes. आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एटम्स में भी बिलीव करते होंगे कि एटम भी एग्जिस्ट करते हैं। अभी तो सर ऐसे ही है। But what about atoms? Existence, अभी हम existence की बात कर रहे हैं ना। तो existence की बात पूछ रहा हूँ मैं। Do you think atoms exist? How does everything work? नहीं, I'm asking all of you, all the class, ताहा आप भी बता सकते हैं। Atoms don't think, so do atoms exist?
Sir, we generally tend to believe anything we are told. So भाई ये रिसर्च मेथड्स की क्लास है, ये आप कहेंगे कि आई जस्ट बिलीव एनीथिंग दैट आई एम टोल्ड, तो फिर तो आप क्या रिसर्च most of the time, sir. No, I'm telling we will change after the class. So that's why we are taking the class. Before that, we were not doing this. अभी आप बात मासूम है, अभी आप जो भी सुनते हैं यकीन कर लेते हैं। Okay, क्लास के बाद आप बहुत तेज हो जाएंगे। हाँ जी, any other thing? Yes, sir. Sir, yes, I believe that atoms exist. The reason is that like as an individual, I cannot know about everything. Like, so we assume that people before us have done some research, and we have some bodies that जो सर्टिफाई करती हैं उनके वर्क को। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम दूसरे रिसर्चर्स की रिसर्च को भी इस चीज के ऊपर लाइक नॉट बिलीव, बट हम उसको एक ऐसा देखिए कंसीडर कर ये लेते वही हैं बात होगी ना, दैट्स यूजिंग द सेम लॉजिक। देखिए आप कह रहे हैं मैं रिसर्चर्स की बात को मानता हूँ, ठीक है। 1000 साल पहले के लोग थे, वो कहते थे हम अपनी एल्डर्स की बात मानते हैं या विलेज मैजिशियन की बात मानते हैं, ठीक है, क्योंकि विलेज मैजिशियंस सारे इससे पहले जितने भी थे वो भी यही बात कहते थे, ये वाला भी यही बात कह रहे हैं। सो आई जस्ट पुट माई ट्रस्ट इन दिस विलेज मैजिशियन। और आजकल हम थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, हम विलेज मैजिशियंस को हम साइंटिस्ट या रिसर्चर कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी तो वही है जो कि रिसर्चर हमें बता रहा है या मैजिशियन बता रहा है, हम उसको बस मान रहे हैं। Is this the reason for believing in these things? Not just this reason, but I think there's a combination of multiple facts. The one thing is that, for example, some researchers said us that they visited the moon, and we see the moon every day as well. So I think this is something that we know something exists, but we don't know how it does. Like रात में चांद आ जाता है और सुबह में चला जाता है. So we had this question, but researchers said that this is the reason, like it exists there, our earth revolves, right? So I think this is a combination of multiple knowledge, not just a single fact कि किसी ने हमें बोला है तो हमने उस चीज को मान लिया। हम उसको खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, बट हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, किसी ने उसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी। दैट्स व्हाई आई बिलीव के अगर हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, रात में चाहता है तो खत्म हो जाता है, अगले दिन नया रात में नया बन के आता है, दिन और फिर रात में खत्म हो गया, अगले दिन नया बनता है चांद। तो maybe we can consider as well अगर कोई हमें इसकी explanation दे दे। So right. Then do you believe in atoms? Right. जी तंसीला आप कुछ कह रही हैं? Sir, I think as kids, obviously we were very naive and we believed in whatever we were told. So I think up until A levels, whatever was written in the books, we knew that yeah, he sahi hai, this is right. Period. There was no supposed argument with it, and neither were the arguments welcomed in the classes, because obviously whatever was given, whatever was written was true, and there was lots of you cannot just go against it. But obviously now that we're in masters and probably a few of us are gonna go towards PhD and we are gonna look into research and we're gonna be researching things, we will have different point of views now. Right. अच्छा ठीक है, ये तो खैर थोड़ा सा आप लोगों को प्रोवोक करने के लिए I was being extra rude. I didn't mean to like offend any of one of you. लेकिन I was just trying to derive at certain things, ठीक है, related to ontology. जैसे अरीश ने एक word use किया था, I'll come back to that. That was about realism. तो ontology जो है असल में it's about our own belief and anyone's belief, जो भी whoever has an ontological belief about the nature of existence, ठीक है, कि जो चीज एग्जिस्ट करती है वो उसकी नेचर क्या है, ये इट्स अ बिलीफ. राइट नाउ आई एम सेइंग इट्स अ बिलीफ, ठीक है, एंड आई विल कम बैक टू इट कि हम उसको बिलीफ को जो है कैन वी डिफरेंशिएट बिलीफ फ्रॉम नॉलेज, ठीक है, और ये उस वक्त हम करेंगे डिस्कशन जब हम इस इश्यू को भी टैकल करेंगे जो आप लोगों ने रेस किया इस वक्त अबाउट के
elders or scientists telling us things, so that's why we believe, yeah, whatever. So there is a criteria, okay, about something, criteria about anything that can be called as a true statement, a truth statement, okay. I don't think हमने ये previous class में ये discuss किया था, लेकिन if we have not, we discussed what is research last class में, ठीक है, research क्या होती है, और आपने कहा था कि it's about adding knowledge, और फिर हमने सोचा था कि अच्छा अगर it's about adding knowledge तो फिर knowledge क्या चीज होती है, ठीक है, what is this knowledge, ठीक है. तो knowledge जो है it's उसकी अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे या गूगल से या उधर से encyclopedia से, तो आपको मिलेगा it's sometimes knowledge is defined as justified true belief, okay. I don't want to go into the details of knowledge right now, लेकिन उसको simplify करके अगर हम ये कहें कि research जो है, it's about making true statements. It's a simplified version of this whole discussion and debate. So one way of defining research is to say that research is about making true statements. Okay, so अगर हम इस पे यहाँ तक आ जाते हैं कि research is about making true statements, तो फिर जो obviously next सवाल आता है हमारे सामने, वो ये होता है कि how do we recognize true statements? This is the first step. Okay? Number one, how do we recognize true statements? And number two is how do we produce true statements? Okay? ये दो सवाल आते हैं फिर बाद में research के लिए. कि true statements. Can you please repeat the questions? I said that if you want to simplify our previous class discussion about research, then maybe we can say that research is about making true statements or generating true statements. Okay? This is a simplified kind of summary of what we discussed in the previous class. Research is about making true statements. So अगर हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं जब हम जहां पे कहते हैं कि research is about making true statements, तो फिर जो है जो उसके बाद इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट सवालात आएंगे हमारे जहन में या किसी के भी जहन में, वो ये होंगे कि how do I recognize a true statement? मेरे सामने जब कोई स्टेटमेंट आती है तो मैं उसको कैसे समझ जाता हूँ कि ये ट्रू है. मिसाल के तौर पे मेरे सामने स्टेटमेंट आई कि पहाड़ पे एक जिन रहता है, ठीक है, तो उसको how do I recognize this is a true statement? और मेरे सामने एक स्टेटमेंट आई कि the moon is still there even if you are not looking at it, ठीक है, तो how do I know that this is a true statement, ठीक है. तो एक तो सवाल ये पैदा होता है कि how do we recognize true statements? This is a very essential quality for any research, ठीक है. It should not be based on things like कि हमें बचपन से बताया गया है या इसलिए ट्रू है या क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसलिए ट्रू है, या ये इसलिए ट्रू है क्योंकि हर कोई यही कह रहा है इसलिए ट्रू है ये. तो we should have as researchers we should know कि उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, what are the exact criteria of finding out whether a statement is true or not, ठीक है. तो एक तो ये हमें स्किल पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर कि फाइंडिंग आउट कि जब कोई when we come across a statement, how do we find out if it's true or not. और दूसरा फिर जो स्किल है जो और इम्पोर्टेंट है वो है कि how do we generate true statements ourselves. हम खुद कैसे एक न्यू ट्रू स्टेटमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने मुझे बताया था कि जो हम नॉलेज जब ऐड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है, एडिशन का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, उस एक्सिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हम उसको जो बाउंड्री है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वी आर पुशिंग द बाउंड्री आउटवर्ड्स. तो उसमें जो इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि this is something that was not known before
and it is something new, उसमें novelty का एक angle है, ठीक है? That's how we add to knowledge, ठीक है? क्योंकि addition उसी वक्त होती है जब हम कोई नई चीज दरियाफ्त करते हैं या नई कोई चीज जो उसमें novelty होती है किसी किस्म से. तो this is another skill जो कि methodology से जिसका ताल्लुक है, वो है कि how do we generate these true statements as a researcher, ठीक है? उसके बाद आगे चल के हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये रिसर्च के दूसरे भी एंगल्स होते हैं और उन्हें दूसरे तरीके से भी we can put it differently also, ठीक है? It's not just one way of describing what is research, ठीक है? This is just one of the many ways in which we can describe research, but there are other ways which we'll look at later on. But इन सब के लिए जो है important चीज ये है कि we start with the ontology, ठीक है? Ontology जो है वो होती है कि हमारा अपना belief या किसी भी researcher का belief for this course perspective कि उसका belief क्या है about what kind of things exist, ठीक है? And in order to explain this, I will come back to the term that was introduced by Arish a little while ago about realism. क्योंकि historically जब से इंसानों ने research करनी शुरू की है, ठीक है, जब से उन्होंने कोशिश शुरू की है कि हम true statements generate करें about true statement किस चीज के बारे में होती है, ठीक है? True statements about what we see around us, ठीक है? Just true statements about our own environment, true statement about phenomena that we observe, true statement about the world that we live in. Okay? So what is these true statements about? These true statements about anything that we can somehow perceive and somehow comprehend, somehow observe, somehow come across any phenomena or thing or event, जो भी चीज है, तो उसके बारे में we want to generate true statements. तो जब से ये humankind ने, not just modern scientists, but जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया है, उस वक्त से जो है ये सवाल सामने था कि जो हम चीजें observe कर रहे हैं around us, उनकी nature क्या है? What is the nature around us? ठीक है? तो इसमें ये दो major schools हैं यहाँ पे, just to keep things simple, क्योंकि और multiple schools and we don't want to talk about them, all of them right away. But the first two basic schools are idealism and realism. Okay, let's take these two terms to see why the question of ontology is so difficult. जो realism है वो ये कहता है कि the moon will exist even if you are not looking at it. ठीक है? This is इस statement में जो चीज assumption छुपी हुई है वो ये है कि we are talking about an observer here, not हमने observer का word इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने उसका concept इस्तेमाल किया. ठीक है? When we are looking at the moon, इसका मतलब we are observing that. ठीक है? तो जो realism वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी observer नहीं है दुनिया में, ठीक है, there's no human being, no observer of any kind, तब भी moon और जितनी भी दूसरी material चीजें हैं, दरख्त और पहाड़ और oceans और stars और galaxies और atoms, वो सब अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे even if there is no observer. ठीक है? So this is the stance taken by realist people, realist जिनका realism का perspective है. एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ऑन्टोलॉजी में जो कि आइडियलिज्म कहलाता है. आइडियलिज्म ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है. ठीक है? देयर हैज टू बी एन ऑब्जर्वर. और वो इसलिए कहते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि देयर इज नो ऑब्जर्वर इन दिस यूनिवर्स. कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम ऑब्जर्वर कह सकें. देन the question about the existence of stars and moons and atoms become meaningless because there's no observer. So
it becomes sort of meaningless to even ask this question, because there's no one to ask this question. There's no observer. No one is there to ask this question. तो एक तो वही कहती है कि मीनिंगलेस हो जाता है. दूसरा एक जो फॉर्म है आइडियलिज्म की, वो ये कहते हैं कि असल में दे डिनाई मटेरियल थिंग्स. ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं मटेरियलिज्म से भी कंट्रास्ट करूंगा, विच इज अनदर लाइक अ रिलेटेड टर्म टू रियलिज्म. मटेरियलिज्म जो है वो कहते हैं कि मैटर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, आइडियलिज्म जो है वो कहते हैं कि सिर्फ माइंड एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे अब हमारे पास दो डिस्टिंक्शन आ गई सामने. एक हमारे पास माइंड है और एक हमारे पास मैटर है. ठीक है, माइंड और मैटर जो हैं, हाउ दे आर डिफरेंट? दे आर डिफरेंट बिकॉज माइंड इज नॉन मटेरियल, माइंड इज intangible, mind is not tangible thing. It's it does not have a material existence. ठीक है, ब्रेन एक चीज होती है जिसकी मटेरियल एग्जिस्टेंस है, लेकिन माइंड जो है माइंड की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है. जैसे कि ख्याल होता है. ठीक है, ख्याल को हम ये नहीं कह सकता मेरे पास क्या आज मेरी जेब में 5 किलो ख्याल हैं रखे हुए मैंने. ठीक है, या मैंने घर में रखे थे 3 किलो ख्याल, कोई चोरी करके ले गया, सिवा 1 किलो रह गया. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस. ठीक है, ख्याल जो है वो इज अ नॉन टेंजिबल थिंग. इसी तरह से बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसको हम आइडिया कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडिया मेरे ज़हन में आया. तो आइडिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई मटेरियल चीज नहीं है. आइडिया इज नॉट अ मटेरियल चीज. फिर आप कहते हैं कि मेरा इरादा है कि मैं कल वहां जाऊंगा, तो इरादा जो है वो कोई मटेरियल चीज. ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि जिनको हम माइंड के अंदर ब्रैकेट करते हैं. तो माइंड आर दोज थिंग्स जो जिसके अंदर आइडियाज होते हैं, माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं, माइंड के अंदर फीलिंग्स होती हैं, माइंड के अंदर जो है हमारे कॉम्प्रिहेंशन होती है, माइंड के अंदर हमारे मेमोरीज भी होती हैं, समटाइम्स बिलीफ भी होते हैं हमारे पास हमारे माइंड में. यानी कि जो नॉन टेंजिबल टाइप की चीजें होती है ना, आइडिया लाइक थिंग्स. ठीक है, तो एक मैंने कहीं सेंटेंस पढ़ा था, वो थोड़ा सा इसको आसानी से क्लैरिफाई करता है कि there are rock like things like stones. ठीक है, that's a typical example of material object is a stone, a rock, and an idea. ठीक है, which is the example of the non-material. ठीक है, तो अब जो आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, या ऑन्टोलॉजी के दो स्कूल्स हैं. एक रियलिस्ट मटेरियलिस्ट स्कूल एक तरफ है, दूसरी तरफ जो स्कूल है वो आइडियलिस्ट है, उसे कहते हैं हम, और वो सिर्फ माइंड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, तो वो मैटर की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते. ठीक है, और बाज मटेरियलिस्ट ऐसे होते हैं that they only believe in matter, they don't believe in mind at all. वो कहते हैं माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, there is nothing such as mind. ठीक है, सिर्फ मैटर है, और मैटर की ही एक मैनिफेस्टेशन है जिसको हम थॉट कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये सब मैटर की प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैटर ही खुद ही उसकी ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है. इट बिकम्स कॉन्शियस, इट कैन प्लान, इट कैन इंटेंड. तो ये जो है सब ये मैटर है. ठीक है, तो देयर आर टू जो यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट जो दो ख्यालात हैं. वो एक स्कूल कहते हैं कि सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है और यूनिवर्स में कोई चीज नहीं, सिर्फ मैटर है. दूसरा जो है ऑन द अदर हैंड एक स्कूल है, वो कहता है सिर्फ माइंड एग्जिस्ट करता है और देयर इज नथिंग एल्स. कोई भी माइंड एग्जिस्ट, माइंड के अलावा कुछ एग्जिस्ट. I know that you do not belong to either of these two. ठीक है, you belong to the third group. जैसे कि माइंड भी होता है, मैटर भी होता है, दोनों चीजें एग्जिस्ट. ठीक है, लेकिन इस स्कूल के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है. इंटरेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ अ नॉन मटेरियल थिंग कैन इन्फ्लुएंस अ मटेरियल. ठीक है, व्हाट इज द कनेक्शन? जैसे हम माइंड कहते हैं, ठीक है, हमारी सोच है, मेरी सोच है कि ये मैं पेन उठा लेता हूँ, मैंने पेन उठा लिया. ठीक है,
तो ये मेरी जहन में एक सोच आया था, ख्याल आया था कि अच्छा मैं क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पिंक पेन अपने हाथ में उठा के इसको कैमरे के सामने रखता हूँ, लेकिन दैट वाज ओरिजिनली जस्ट अ थॉट इन माय माइंड। लेकिन उसने एक्चुअली एक फिजिकल वर्ल्ड में एक चेंज लेके आ गया वो थॉट, और उसने वाकई एक एक्चुअली जो है पिंक पेन उसको जो है अपनी जगह से उठा लिया और वो फिजिकल वर्ल्ड में एक चेंज आ गई। ठीक है, तो एक नॉन मटेरियल चीज ने एक मटेरियल चीज की जो है उसमें उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करने में कामयाब हो गया। एक नॉन मटेरियल चीज जो है वो एक मटेरियल चीज की पोजीशन चेंज करने में कामयाब। तो ये कैसे कामयाब हुई, वी डोंट नो। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस। There are obvious problems with pure materialism. There is obvious problems with pure जो idealism है, जो कि सिर्फ ideas की existence में believe करते हैं और किसी और चीज की existence में नहीं believe करते। और जो in between schools हैं सारे, जो कहते हैं कि नहीं दोनों चीजें exist करती हैं या दोनों कोई भी चीज exist नहीं करती, ये भी एक स्कूल है। ठीक है, तो ये ontological questions हैं कि what actually exists, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, is it just an idea in our mind, or is it something out there in reality, it exists out there, which so these are different schools of thought in terms of ontology, and the reason they are important for a researcher to know about is that everyone, all of us and all researchers have belong to one of these schools। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनमें से किसी भी स्कूल से बिलोंग ना करें। ठीक है, we have to belong to one of these schools, whether we realize it or not, but we do have very firm convictions about one of these schools। ठीक है, या तो हम idealist होंगे pure, या हम pure materialist होंगे, या फिर हम in between कहीं पे, या outside these two extremes कहीं पे। ठीक है, but we have to have some opinion, some stance about the nature of reality and nature of existence। ठीक है, what exists, वो हमारे हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं और हमारा अपना opinion होता है। We have to be just be aware of our own beliefs in this area। Sir, So I any have a questions? question. जी, Yeah. सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइंड वर्सेस मैटर की, बेसिकली बिलीव व्हाट वी थिंक, व्हाट लाइक एवरीथिंग दैट माइंड डज, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर। सर बिलीफ तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है, मतलब आपकी इमेजिनेशन तो लिमिटलेस है। तो अगर हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें बिलीव करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अगर हम कह रहे हैं ये आइडियलिज्म है, तो लाइक मैटर तो फिर उसको कभी आउटडेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैटर तो की तो कुछ एग्जिस्टेंस है। तो आई थिंक उसके ऊपर तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमेशा, लेकिन नहीं दूसरी मैं को समझा नहीं आपके क्या स्टेप हो कमेंट सकता है। आपका, सॉरी, what you are trying सर to आपने say? कहा जैसे टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक हम बिलीव करते हैं कि हमारी थॉट्स के अंदर लाइक माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आइडियलिज्म की साइड के ऊपर, कि उसके अंदर हम बात करते हैं माइंड से रिलेटेड स्टफ के ऊपर, और दूसरी रियलिज्म की साइड पे हम मैटर के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम उसके बारे में कहेंगे कि हाँ मतलब हाउ दिस एग्जिस्ट, क्योंकि मैटर की फॉर्म में हैगी। तो मुझे जो चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो रही वो ये हो रही है कि हम लाइक किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों के। belief mind is something that can consist of anything ना, like हम किस मैटर के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। तो क्या हम assumptions के ऊपर बात कर रहे होते हैं जब हम आइडियलिज्म की बात कर रहे होते हैं, और अगर हम रियलिज्म की बात कर रहे होते हैं क्या हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे होते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक आइडियलिस्ट का रोल प्ले करने लगूँ अभी इस वक्त, ठीक है, इफ आई से कि आई एम एन आइडियलिस्ट, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी चीज मटेरियल चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे ये जो आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है ये तो मटेरियल है, आप इसको, ये एग्जिस्ट करता है, व्हाई आर यू डिनाइंग दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पेन। तो मैं ये कहूँगा कि आई एम डिनाइंग दिस बिकॉज इसकी जो भी एविडेंस मुझे मिल रही है of the existence of this pen is through my senses, and my senses are ultimately my mind। ठीक है, so if I'm seeing that is a pink in color,
इसका मतलब मेरी आंखें जो है मुझे बता रही हैं कि ये पिंक इन कलर है, ठीक है। आंखें जो हैं वो असल में मेरे विजुअल कॉर्टेक्स में एक आइडिया जनरेट कर रही है अबाउट पिंकनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो वो जो आइडियलिस्ट है, यानी कि इस वक्त जो मैं आइडियलिस्ट का जो रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये कि वो सिर्फ एक्चुअली एक माइंड है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हुए हैं मेरे स्क्रीन पे, ये असल में आप स्क्रीन में नहीं बैठे हुए, ये मेरा सिर्फ ख्याल है, मेरा तस्वुर है। ये पेन जो मैंने हाथ में उठाया हुआ है ये मैंने एक्चुअली नहीं उठाया, ये मैंने, मेरा माइंड जो है बस वो सोच रहा है कि मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ और मैं इस वक्त जो है ये टाइम हुआ हुआ है और मैं मेरा ये जॉब है, मेरी ये प्रोफेशन है, मेरी ये फैमिली है, ये सब चीज़ें मुझे मेरे माइंड ने बताई हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट किसी तरह का प्रूफ नहीं है इनकी एग्जिस्टेंस का, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें मुझे मेरा माइंड बता रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ें हैं ही नहीं असल में। Why should I believe in things that only my mind is telling me, ठीक है। क्योंकि there is no other way of knowing about these things। जब तक मुझे माइंड मेरा नहीं बताएगा कि ये इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी रिजिडनेस कितनी है, ये कितने का खरीदा था आपने, ये कब खरीदा था, ये सारी चीजें मुझे माइंड ही बता रहा है मुझे, और तो कोई देयर इज नो अदर पॉसिबल वे ऑफ नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस मार्कर हियर। तो व्हाई शुड आई जस्ट पोस्टुलेट कि नहीं असल में भी एक चीज है ये, why this is just extra luggage, extra baggage, why I don't want that extra baggage। मैं कह रहा हूँ सिर्फ माइंड तक सही है, एक माइंड चीज होती है, उसकी एग्जिस्टेंस में मैं बिलीव करता हूँ और मुझे माइंड सारी चीजें बता रहा है कि इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त ये आदमी ये कह रहे हैं, इस वक्त ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, इस वक्त चांद निकला हुआ है, इस वक्त नहीं निकला हुआ, एवरीथिंग मुझे जो है मेरा माइंड बता रहा है। तो आई डोंट वांट टू गो वन स्टेप अहेड एंड से नहीं 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 माइंड के अलावा भी एक्चुअली कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्योंकि देयर इज नो logical reason for believing in that, ठीक है। तो that's one ontological perspective, but if I become a realist तो मैं कहूँगा कि नहीं ये पेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जो आपका माइंड है वो भी असल में एक मैटर की फॉर्म है, और आपका मैटर सिर्फ एक रिएक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिएक्ट कर रहा है, और वो आपको जहन में एक ब्रेन में एक न्यूरॉन के अंदर एक सर्किट है, और उस सर्किट में एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन से ये इल्यूजन पैदा हो जाती है कि जैसे आप कोई कॉन्शियस चीज़ है। असल में कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मटेरियल चीज़ है, ठीक है। तो उनका बिल्कुल ऑपोजिट एक स्टांस है, मटेरियलिज्म का, जो मटेरियलिस्ट हैं उनका बिल्कुल अपोजिट स्टांस है, वो सिर्फ मैटर की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। जो आइडियलिस्ट हैं उनका डायमेट्रिकली ऑपोजिट इंस्टांस है, दे ओनली बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड। तो हमारे पास ये दो पोल्स हैं, एक माइंड है, एक मैटर है, ठीक है। इन ये इनमें से दोनों में से क्या चीज एग्जिस्ट करती है, दोनों करती हैं, दोनों नहीं करती। दिस इज द क्वेश्चन फॉर ontology। ontology is the study of existence of things, but ontology is about the study of the nature of reality, कि nature है क्या, how do we find out, how do we know कि ये materialist सही हैं या idealist सही हैं या realist सही हैं या somewhere else कोई और स्टांस है इसका बारे में, ठीक है। और मटेरियलिज्म के अंदर भी जो है एग्जैक्ट उनकी क्या मटेरियल की क्या फॉर्म है, क्या है, ठीक है। मैटर इटसेल्फ उसकी क्या फॉर्म है, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरिस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, ये स्ट्रिंग्स हैं असल में, और फिर क्वांटम वाले आ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वाले कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, मैथमेटिकल आइडियाज हैं। तो इनकी भी नेचर जो है ऐसा सच ये ऐसा नहीं है कि साइंस ने आपको एक डेफिनेट आंसर दिया अभी तक। साइंस ने हैज नॉट गिवन अस एनी आंसर अबाउट द नेचर ऑफ द एटम इटसेल्फ। और इसकी कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री तो है नहीं। आप देखें कि रदरफोर्ड कब थे, इसी 1900 में थे, और बोहर और सब जिन्होंने ये एटम दरियाफ्त किया, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिर अभी स्ट्रिंग थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये कोई बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, नई चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और फिर हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास और भी नई चीज़ें आ जाए। तो दैट वाज अबाउट समथिंग अबाउट ontology। Any other questions about ontology? सर, जी इसमें आपने कहा था कि जैसे आइडियलिस्ट हैं वो प्योरली उस पर बिलीव करते हैं, माइंड के ऊपर और सब कुछ।
तो और फिर आपने एक बात ये कही थी कि हम लोग जो है वो इसमें से किसी एक में बिलीव करते हैं या फिर इन बिटवीन बिलीव करते हैं। तो अगर हम इन बिटवीन पे जाएंगे तो बेसिकली जो उस फील्ड का है जो कि प्योरली है, उस मतलब उसमें हमने प्योरली का वर्ड यूज किया हुआ है, तो वो फिर टर्मिनेट हो जाती है। तो हम उसे कुछ और नाम देते हैं या हम उसे किस तरह से फिर रखते हैं? नहीं, ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनके अपने अपने लेबल्स हैं और अपने अपने उनकी यानी कि अपनी एक पूरी क्या कहते हैं, एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज है उनकी, और अपने अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं. दीज आर वेरियस टर्म्स that are out there. These terms include terms like materialism, terms like realism, terms like idealism. तो ये सारी चीजें जो हैं, these are terms are out there. और ये इनका जो है, इसके बारे में मैं मजीद आपको बताऊंगा कि और कितनी टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है अभी. But right now I would like to take a 15 minutes break. और 15 मिनट की ब्रेक ले लें आप, उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज नोट देम डाउन so that you don't forget during the break, and when we come back you can ask these questions. Okay. All right, so I'll be back in 15 minutes. All right. All right, welcome back everyone. Please type in or switch on your cameras when you're back. All right, so any questions from the things that we were discussing before the break? Yes sir, I do have a question. जी. So before the break आपने basically दो school of thoughts बताए थे, idealism और realism. So sir, in the real world, like they interact with each other or they are like poles apart, like there is like some gray area in between where they operate, because like there is no way like they will be like two different opposite school of thoughts and they don't interact with each other, because real world में ऐसा नहीं होता mostly. Like आपको there is always a gray area in which they operate. Because like अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ आइडिया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एटम्स रियल है या नहीं, so there is like what idealism कि मेरे पास एक आइडिया है, and then I will perform some operations in the real world through my hands and observe with my eyes and all of that and see that कि हाँ यार कि मेरे पास कोई conclusion आए कि atoms हैं या नहीं है. So is there like some gray area in which they operate or not? अफान देखिए, ये जो है आइडियलिज्म और रियलिज्म, they describe the belief of the researcher or any one person. ठीक है, तो it's just like एक आदमी जो है, let's say इंग्लिश में उसकी लैंग्वेज है, एक दूसरा आदमी उसकी उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है. लेट्स सपोज जो उर्दू लैंग्वेज वाला है उसको इंग्लिश नहीं आती, और जो इंग्लिश वाला है उसको उर्दू नहीं आती, ठीक है. तो हम ये क्वेश्चन ये यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं कि इन दोनों लैंग्वेजेस का आपस में क्या ताल्लुक है. हम ये हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि ये आदमी जो है ये कौन सी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है. तो जब हम रियलिज्म और आइडियलिज्म की बात करते हैं या मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म की बात करते हैं, आई थिंक मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म ज़्यादा बेहतर टर्म्स हैं कंट्रास्टिंग, क्योंकि एक मटेरियलिज्म मैटर को रिप्रेजेंट करती है और आइडियलिज्म आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है. तो मैं ये कह रहा था कि जो आदमी बिलीव करता है, जिसका यानी कि यकीन होता है ये कि सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो मटेरियलिज्म में बिलीव करता है वो आदमी, ठीक है. दैट पर्सन बिलीव्स इन मटेरियलिज्म एंड दैट पर्सन denies the existence of any non-material things. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता
कि आइडिया टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये उसका अपना पर्सनल स्टांस की बात हो रही है, ठीक है। तो जाहिर है जो आदमी को मटेरियलिज्म में जो बिलीव करता है वो उसका यकीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्म होता है, यानी कि उसकी जो कन्विक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो हर किसी से ये कहेगा कि मैं देखिए मैं सही हूँ और कोई भी जो मुझसे इख्तलाफ करता है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है। और जो लोग ये कहते हैं कि आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं वो सिंपली दे आर सिंपली मिस्टेकन, they do not know what is reality। मुझे मालूम है कि रियलिटी क्या है, और रियलिटी जो है वो ये है कि मैटर की चीज बनी, हर पूरी यूनिवर्स जो है वो सिर्फ मैटर से बनी हुई है। मैटर के अलावा उसमें कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि कोई भी चीज मौजूद नहीं है सिवाय मैटर के, ठीक है। ये मटेरियलिस्ट का कन्विक्शन है, ये उसका उसका एक तरह से समझने आपके यकीन है, ये उसका, दिस इज देयर बिलीफ सिस्टम और बिलीफ। आइडियलिस्ट जो होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो ये कहते हैं कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। ये पूरी जो चीज़ें हम देखते हैं जो हमें मैटर की सूरत में नज़र आती हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, कारपेट है, ये चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं ये एक सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ हमारे माइंड का धोखा है, हमारी अपनी नज़रों का धोखा है, ठीक है। तो ये हम जो अपने आप को देखते हैं और हम कहते हैं कि हम एक मटेरियल के बने हुए हैं, हमारा हमारा फ्लैश है, बोन्स हैं, ये सिर्फ जो है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ इनके आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। There is an idea of a bone, there is an idea of flesh, there is idea of time, there is an idea of space, there is an idea of energy, there is idea of sound, there is an idea of vision। ये सब आइडियाज हैं, ये हकीकत में they don't exist, only the ideal forms exist, ठीक है। तो वो उस आदमी का ये जो है वो यकीन ये है कि ये सिर्फ आइडियाज हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि ये एक्चुअली मैटर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये असल में मैटर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जिस चीज़ को हम मैटर समझते हैं, मिसाल के तौर पे एक क्रिकेट बैट, वो क्रिकेट बैट जो है वो सिर्फ एक आइडिया है, और अगर हम देखते हैं किसी प्लेयर को क्रिकेट बैट पकड़ के भागते हुए तो वो सिर्फ हमारा ख्याल है कि ये प्लेयर है जो भाग रहा है क्रिकेट बैट लेके, असल में वहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। वो सिर्फ हमारा अपना ज़हन का अपना अंदर का इंटरनल है ये सब चीज़, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल वर्ल्ड, देयर इज ओनली इंटरनल वर्ल्ड। तो इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लफ्ज़ को, ठीक है। तो मटेरियलिस्ट जो है वो इंटरनल वर्ल्ड को डिनाई करते हैं, और आइडियलिस्ट जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिनाई करते हैं, ठीक है। तो this was these are the two schools of thought। Any other question? Any comments anyone wants to make? Sir, do these extremes really exist, or is it also a thing like people having these beliefs really exist? One having idealism and other having जी realism. बिल्कुल। देखें आजकल की दुनिया में आपको मटेरियलिज्म में बिलीव करने वाले तो काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट हैं जो कि कॉन्शियसनेस पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है कि हम किस चीज़ को कॉन्शियसनेस कहते हैं या आइडिया किस चीज़ को कहते हैं, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड आइडिया। तो जो भी यानी कि जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं या जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि माइंड को किसी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है, वो फिलोसफर्स भी हो सकते हैं, वो न्यूरो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, वो मैथमेटिशियंस भी हो सकते हैं। anyone who tries to contemplate कि ये जो है माइंड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो उन स्कूल्स में आपको मिलेंगे प्योर आइडियलिस्ट अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि ये जो आइडिया है ये बहुत पुराना है,
इट्स नॉट अ न्यू आइडिया, काफ़ी पुराना है। और मैंने बताया था कि शुरू से जब से इंसान ने सोचना शुरू किया उस वक्त से ये लोगों के जहन में ख्यालात हैं, ठीक है। तो जाहिर है जो कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, उनकी अपनी अपनी ऑन्टोलॉजी होती है, अपनी अपनी कॉस्मोलॉजी होती है, उनके अपनी थ्योरीज होती हैं, नज़रियात होते हैं कि ये यूनिवर्स क्या चीज़ है, किस तरह से ये हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्योर आइडियलिस्ट भी मौजूद हैं दुनिया में इस वक्त भी, ऑल्दो मे बी कम होंगे, लेकिन अभी भी हैं। और मटेरियल में बिलीव करने वाले मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग हैं इस वक्त। एंड देन देयर आर अदर पीपल हु हैव kind of mixed beliefs about these। और लेकिन जो है साइंटिफिकली जो है अभी तक कोई इस तरह का हमारे पास क्लियर कट वो आंसर नहीं है। वी डोंट हैव क्या कहना चाहिए कि एयर टाइट किस्म का कोई आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक और चीज, अब थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे हम, लेकिन आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और इसको मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को, और इफ आई just delete everything and look at the structure of knowledge को कह लें स्ट्रक्चर या साइंस का स्ट्रक्चर, आई डोंट नो इस वक्त क्या टर्म होनी चाहिए मेरे पास, मैं ये टर्म बाद में अभी यूज करूंगा, अभी सही मुझे टर्म नहीं मालूम क्या है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये साइंसेस कहना चाहिए, लेट्स से साइंसेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास बॉटम में जो है वो हमारे पास हार्ड साइंसेस हैं, और हमारे पास जो टॉप है वो हमारे पास सॉफ्ट साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉटम में जो हार्डेस्ट साइंस है हमारे पास, ठीक है, वो मैथ्स है। दिस इज द हार्डेस्ट साइंस। इसको हार्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो आमतौर पे थ्योरम्स होते हैं वो एक दफा जब प्रूफ हो जाएं तो फिर उनको चैलेंज नहीं किया जाता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दी स्टेटमेंट्स आर फिक्स्ड, और आप उसमें डिफरेंट मैथमेटिशियंस हैं जो उनमें डिसएग्रीमेंट जो है, डिसएग्रीमेंट का लेवल बहुत कम होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैथमेटिशियंस जो हैं दे डोंट डिसएग्री। अगर किसी मैथमेटिशियन ने कहा है कि a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, so there will be hardly anyone who will come and challenge कि नहीं इस तरह से भी होता है, इस तरह से, ठीक है। तो that's why we call it the hardest science। उसके ऊपर जो आते हैं हमारे पास वो आती है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स भी काफी हार्ड साइंस में आता है क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं है जितना मैथमेटिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में फिर भी हमारे पास ज्यादा तेजी से चेंजेस आती हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स थी पहले, और फिर उसके बाद आइंस्टाइन आया, उसके बाद फिर हमारे पास क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम मैकेनिक्स आया, फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई, और फिर इस तरह से अब और भी नई टाइप की चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो फिजिक्स जो है जरा सॉफ्टर एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स, इज अ बिट सॉफ्टर, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द थियोरी, ठीक है। जो साइंटिस्ट है, न्यूटन है या आइंस्टाइन है या स्टीफन हॉकिंग है, उसकी बेसिस पे फिर हम वो आगे चलाते हैं साइंस को, फिजिक्स को, ठीक है। तो इस हद तक जो है ना वो हमारे पास ये उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। और उसके ऊपर जो है हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री भी काफी हार्ड है, और उसके ऊपर फिर चले जाएं तो फिर बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। बायोलॉजी इज इवन सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें फिर हमें सॉफ्टनेस में ये भी एक चीज शामिल हो जाती है कि हम कितना
कितना एक्यूरेटली हम समझते हैं उस चीज को जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हम अभी इतना अच्छा तरीके से नहीं समझते हैं जितना अच्छे तरीके से हम फिजिकल सिस्टम्स को समझते हैं या केमिकल सिस्टम्स को समझते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम्स को हम ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा फंडामेंटल लेवल पे हम समझते हैं उसका। तो फिजिक्स की जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं चार, और जो हमारी स्टैंडर्ड थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल कहलाता है, वो हमें बताता है कि क्या स्ट्रक्चर है सब एटॉमिक लेवल पे, रियलिटी का क्या स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं वो हमारे लिए अभी तक नए हैं, वी आर स्टिल लर्निंग। हमारे पास बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज लाइफ, ये अभी तक इतना हम आंसर नहीं कर सके सही तरह से, कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सका, बता नहीं सकेगा वेरी व्हाट इज लाइफ। ठीक है, फिर उसके ऊपर जब हम चले जाते हैं बायोलॉजी से और ऊपर, तो फिर और सॉफ्टवेयर साइंसेज हमारे पास आ जाती हैं, लाइक इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। दीज आर इवन सॉफ्टवेयर साइंसेस, क्योंकि इनमें जो है थ्योरीज बहुत तेजी से चेंज भी होती रहती हैं और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि कौन सी थ्योरी एक्चुअली बिल्कुल सही है। कंसेंसस कम हो जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स में आपको देखेंगे आप डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा आपको मिलेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स बल्कि इकोनॉमिक्स की हैं। अच्छा, ये वाली ये फॉर्म है, ये वाली ये इकोनॉमिक्स है, ये वाली इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी चलती किस तरह से है ये हमें इतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि जो बचपन से हमें बताते हैं वही हम समझ जाते हैं, तो हमें भी जो बचपन से बताया गया है कि भाई ये इकोनॉमी इस तरह से चल रही है, ये इन्फ्लेशन रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये इस तरह से चलता है, वो हम उसको बिलीव कर लेते हैं, हाँ वाकई ये इस तरह से हुआ। ठीक है, लेकिन वी डोंट हैव अ वेरी फर्म ग्रास्प ऑन इकोनॉमिक्स कि असल में ये होती कैसे। एक बहुत मशहूर जो कोटेशन है, जो मजाक उड़ाया जाता है इकोनॉमिक्स का, तो वो कहते हैं कि इफ यू ले ऑल द इकोनॉमिस्ट एंड टू एंड दे विल नॉट रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, तो इससे ये सिर्फ अंदाजा ये होता है कि बहुत ज्यादा सीवियर डिसएग्रीमेंट्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी में। ठीक है, कि थ्योरी का मतलब होता है कि वी ट्राई टू एक्सप्लेन कि इन रियलिटी जिस तरह से दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, बट हम उसको एक्सपेरिमेंटली इतना प्रूव नहीं कर सकते जितना हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितना हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स में इतने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सॉफ्टवेयर। फिर उसके ऊपर साइकोलॉजी जब है वो काफी रिसेंटली बिल्कुल ही तकरीबन ऑलमोस्ट नॉन साइंटिफिक थी। उसको साइंस, सॉफ्ट साइंस भी नहीं कहना चाहिए था, मैं इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि वो। फिर पॉलिटिक्स आ जाते हैं, इस तरह की एक ये हायरार्की बनती है, हार्ड और सॉफ्ट साइंसेस। ठीक है, तो द रीजन आई केम टू दिस क्लास, व्हाट वाज द रीजन आई केम, आई डोंट नो। किस बात से हमने ये शुरू की, इससे पहले क्या था बात कर रहे थे? Sir, I asked the question that do these really exist, people having these beliefs? नहीं, उसके बाद कुछ और बात की थी, इससे डायरेक्टली लिंक किया। There was something else. Did anyone else ask any question? इसके रिस्पॉन्स में मैंने ये कहा। Who asked the last question before we discuss this? I asked the question. जी इब्राहिम, क्या था क्वेश्चन आपका? My question was, do these people having extreme beliefs like realism and idealism really exist? नहीं, उसका तो मैं जवाब दे दिया था ना आपको कि देखिए, But that was the last question, I think. that was the last question. Yes, sir. I think you continued with your answer कि मैं ये भी बता देता हूँ, आपने कहा था कि थोड़ी अलग चली जाएगी बात। Okay, so I sorry, I totally have no idea why I thought there was a link between this and your question, but if I try to recall, I don't know, I totally lost it. अब मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी को। So any other question? Yes. सर क्लास Idealism. में जी please go on. सर आइडियलिज्म आप रियली एग्जिस्ट करते हैं या फिर? सारिम खान, आप बताइए पहले। जी सर, आइडियलिज्म सर रियली एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें कोई साइंटिफिक अभी रिसर्च आई नहीं है
इस कि चीज के लिए आइडियलिज्म रियली एग्जिस्ट करती है? सर आइडियलिज्म रियली एग्जिस्ट करती है? आप बोल रहे साइंटिफिक रिसर्च कोई आई नहीं है अभी इस चीज की। हाँ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा था कि आइडियलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। आइडियलिज्म इज अ ब्रांच ऑफ ऑन्टोलॉजी, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा गया। आप जस्ट गो टू गूगल एंड राइट आइडियलिज्म, तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारा इसके ऊपर काम हुआ है, काम हो रहा है अभी तक। तो आई कांट से कि आइडियलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि ये जो एंटिटी है कॉल्ड थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक अभी तक हमने ग्रास्प नहीं किया कि ये एक्चुअली होती क्या थी, ठीक है। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड थॉट, साइंटिफिकली ये क्या है, ठीक है। क्योंकि जो प्रेवलेंट कंसेप्शन है साइंस का इस वक्त, लेट मी से दिस, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाए इसका, लेकिन साइंस करंटली फॉलोज साइंटिफिक मेथड, ठीक है, most of the science, ठीक है। और the reason I'm a bit reluctant in saying this is that I don't want to convey the impression that scientific method is the only method of doing science, ठीक है। तो ये पहली मैं इसको clarify करना चाहूँ। Yeah, although most of the science today is done using the scientific method, ठीक है, और ये हमारी जो methodology की टर्म है उसमें वहां से भी इसका लिंक बनता है कि साइंटिफिक मेथड इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। और इसकी जस्टिफिकेशन भी हमारे पास है। नाउ जस्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन हमारे पास और क्या assumptions हैं उसके ऊपर, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू गो फर्दर इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम साइंटिफिक मेथड को सामने रखें इस वक्त, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो साइंटिफिक मेथड जो है वो it requires accurate ways of measuring things that we are studying, ठीक है। तो उसमें measurement जो है एक important component होता है scientific method का। तो अभी तक कोई इतना खास convincing किस्म का method हमारे पास सामने नहीं आया जिससे हम ये thoughts को measure कर सकें, ठीक है। हम we can measure brain activity, उसको हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है कॉल्ड थॉट या आइडिया, इसको क्वांटिफाई करने का कोई इतना खास अभी तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ unanswered questions. Biggest unanswered question I probably is कि what is consciousness? Consciousness itself, ये जो question है, what is consciousness? ये इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि we are all very much familiar with this idea. Everyone very easily becomes familiar with this idea कि अच्छा, okay, I'm conscious, this person is not conscious. ये इस वक्त temporarily subconscious हो गया, unconscious हो गया ये आदमी। और या ये हम कहते हैं normal language में like कि we have a higher form of consciousness than let's say plants and animals, ठीक है। हो सकता है प्लांट्स की भी कुछ कॉन्शियसनेस हो लेकिन उनका लेवल वो नहीं है जो हमारा लेवल है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के हम फैमिलियर हैं इस कॉन्सेप्ट से। और हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें बिल्कुल ही कोई शक व शुबा नहीं रहता कि हम कॉन्शियस हैं, ठीक है। हमें रहता है हाँ हाँ हम कॉन्शियस हैं और मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं हूँ, यानी कि ये जो कॉन्शियस हमारी अपनी कॉन्शियसनेस है उससे हमारा बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो हमारी जो हमारा जो अपनी कॉन्शियसनेस है वो क्या चीज़ है। लेकिन साइंटिफिकली ये क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इसका कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है, कोई क्लियर आंसर नहीं है। और ये इसलिए आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है ये वाला सवाल, क्योंकि जो डेटा साइंस है या सॉरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये आंसर करना पड़ेगा सूनर और लेटर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, and they have to answer this question because if you make a robot and you claim that this robot is conscious, then you'll have to somehow prove that this robot is conscious, okay? Because robot can very well mimic
और वो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वेरी नियर फ्यूचर we'll have robots that mimic human behavior almost perfectly, ठीक है, उसमें कोई वो बिल्कुल हमारी तरह बात करेंगे, ठीक है, और हमारी तरह उसके फेशियल एक्सप्रेशन होंगे उनके, ठीक है, उनसे जब आप सवाल करेंगे कि आर यू कॉन्शियस, तो रोबोट कहेगा यस आई एम कॉन्शियस। अब उनसे कहेंगे कि डू यू फील हैप्पी समटाइम्स और सैड समटाइम्स, तो वो कहेगा हाँ आई फील हैप्पी व्हेन माय टीम विंस एंड आई फील सैड व्हेन माय फ्रेंड गोज अवे। I mean, so there will be no way of knowing by just looking at the responses of that robot that this particular robot is not conscious, ठीक है। तो आप उसको, आपके लिए कोई scientific criteria होना पड़ेगा to say कि ये robot जो है conscious है या नहीं है, ठीक है। Is it just a machine like a computer? कंप्यूटर को हम कहते हैं ना कि ये कॉन्शियस नहीं है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, हम कहते हैं हम कॉन्शियस हैं, ये कंप्यूटर कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल हमारी तरह बिहेव करने लग जाएगी, which will be not very far away from now, at least यानी कि in certain constrained environments it will mimic exactly our behavior, ठीक है। या हो सकता है कि रोबोट नहीं हो, एक एनिमेटेड इमेज हो स्क्रीन पे आपके, और वो बिल्कुल आपसे इस तरह से बात करो जिस तरह से कोई ह्यूमन बात करता है आपसे, ठीक है। जूम में एक और विंडो खुली हुई हो, वहां पे एक रोबोट बैठा हुआ है, बस बात कर रहा है, ठीक है। तो हाउ वुड यू नो कि ये वाली विंडो है, इसमें रोबोट जो है वो एनिमेटेड रोबोट है और इट्स नॉट अ कॉन्शियस पर्सन ऑन द अदर साइड। तो वो जो साइंटिफिक लेवल है उसका हमारा पास कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग का, वो नहीं है इस वक्त हमारे पास। तो जब आप बात करते हैं कि ये आइडियलिज्म प्रूफ हो गया या नहीं प्रूफ हो गया, तो आइडियलिज्म एज अ सब्जेक्ट तो अब वो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत लिटरेचर इसके पास मौजूद है, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट मैटर है कि ये आइडिया क्या चीज होती है, थॉट क्या चीज होती है, कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है, इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमारी अभी तक बहुत ज्यादा फर्म लेवल पे नहीं आई। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, नॉट जस्ट कि आइडियलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? Any other comments? Yeah, sir. I have this question, but I don't know if this is the right thing to ask or not. But still, I'm going to. Sir, what do you think? How other things affect these mindsets, like religious? When we talk about religious is something that um, we just believe in it. So if people are idealist or realistic, so how do they define what we get from the religious? All right, Neil, this is a good question, or I think it's a very pertinent question. We can answer this question. At least मैं इस आपकी क्लास में ये कर सकता हूँ, ये आंसर इसका। उसके लिए हमें एक दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा। और नाउ दिस इज अगेन, जैसे मैंने अभी एक टेंजेंट पे गया था मैं, और आपको मैंने सब्जेक्ट्स की एक हायरार्की बताई थी, इसी तरह से एक और टेंजेंट है which I think is important for us to know. अच्छा, वो कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड द थ्री वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। थ्री वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट फिलोसफर्स और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सामने लेके आए हैं। एक जो फिलोसफर है जिसको मैंने एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, वो हाबरमास, Jürgen Habermas. In some circles they regard him as the greatest living philosopher today on earth, ठीक है। तो इसको मैंने काफी एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। तो he has come up with this idea of three world। और दूसरे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है पेनरोज, ठीक है, वो भी थ्री वर्ल्ड आइडिया उनका भी एक है, ठीक है, वो भी लेके आए। तो पेनरोज जो हैं, पेनरोज की थ्री वर्ड्स जो हैं वो हैं, पेनरोज सेज
पेनरोज की जो 3 वर्ड हैं वो हैं यस मुझे एग्जैक्ट उनके लेबल्स इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आई थिंक दीज आर द 3 वर्ड्स पेनरोज की। एक मटेरियल वर्ल्ड है, एक मेंटल वर्ल्ड है और एक मैथमेटिकल वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये रॉजर पेनरोज ने 3 वर्ड्स डिफाइन किए। तो मटेरियल वर्ल्ड जो है वो ऑब्वियसली इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी हमने अभी देखा था, एटम्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, एनिमल्स, ट्रीज, ओशंस, माउंटेन्स, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। मेंटल वर्ल्ड जो है रॉजर पेनरोज की, वो हमारे दिस इंक्लूड्स आइडियाज लाइक थिंग्स। ठीक है, थॉट्स, आइडियाज, ये सारे मेंटल वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे जो यानी कि दिमाग के अंदर जो हमारा जो वर्ल्ड है वो मेंटल वर्ल्ड है हमारी। और पेनरोज जो है तीसरी वर्ल्ड जो है वो नंबर्स, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। क्योंकि इन तीनों में डिस्टिंक्शन ये है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए किसी ह्यूमन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेंटल वर्ल्ड के लिए ह्यूमन प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट्स अ प्योरली ह्यूमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इफ देयर आर नो ह्यूमंस देन देयर इज नो मेंटल वर्ल्ड। या ह्यूमंस ले लें या एनी कॉन्शियस बीइंग लेने से। ठीक है, जो जिसका भी माइंड, जो भी कोई भी ऐसी एंटिटी जो माइंड पोजेस कर सकती है, उसके पास एक मेंटल वर्ल्ड होगी। ठीक है, मेंटल वर्ल्ड इज दिस इंटेंजिबल नॉन मटेरियल वर्ल्ड। और फिर जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं वो although they are non-material but they are not mental per se, because their existence does not depend on the presence of human beings or any other entity that possesses mind. ठीक है, तो मेंटल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट है मैथमेटिकल वर्ल्ड। ठीक है, नंबर 2 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नंबर whether there is anyone who understands number 2 or not, number 2 itself वो exist करेगा। ठीक है, आप लोग ये इसको कर रहे हैं एग्री इस चीज को कि नंबर 2 exist करेगा whether or not there is anyone who understands maths। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी आप सोच सकते हैं अपने फारिग टाइम में कि नंबर्स क्या होते हैं और मैथमेटिकल वर्ल्ड क्या होती है। बहरहाल ये पेनरोज की मैथमेटिकल वर्ल्ड है तीसरी। एंड जो हाबरमास है, हाबरमास की जो 3 वर्ड्स हैं वो एक है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, एक है सब्जेक्टिव वर्ल्ड और एक है इंटर सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है सिमिलर टू मटेरियल वर्ल्ड ओवर हियर। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे वो हमारे जो हैं यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में। और सब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है वो हाबरमास की, ये जो है सॉरी पेनरोज की, let me choose another color. Subjective world is this sorry, ये जो है पेनरोज की मेंटल वर्ल्ड से मिलती जुलती चीज है। ठीक है, बिकॉज इट्स इंटरनल, सब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल प्योरली पर्सनल वर्ल्ड होती है। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड होती है, वो उसका बिल्कुल इंटरनल मैटर होता है। ठीक है, nobody else has access to that subjective world। ठीक है, वो जो इंसान की सब्जेक्टिव वर्ल्ड होती है उसी के पास। then there is an intersubjective world जिसमें वो सारी इंटेंजिबल चीजें आ जाती हैं जो कि ह्यूमंस मिल के बनाते हैं, यानी कि इंटरसब्जेक्टिवली बनाते हैं। और इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स नॉट मटेरियल थिंग। ठीक है, इट्स नॉट, डज नॉट हैव लाइक अ वेट और कलर और एनीथिंग।
And it's not purely subjective because it has its own existence. Language की existence किसी एक person पे depend नहीं करती, ठीक है? Whether that person is there or not, language जो है itself वो exist करेगी, ठीक है? तो ये intersubjective चीजें जो हैं, इनमें culture आ जाता है, language आ जाती है, customs, rituals, ये सारी intersubjectivity में आ जाती है, ठीक है? और तो हमारे जो traditions हैं, even things like law, ethics, morality, ये सारी intersubjective चीजें आ जाती हैं, values, traditions, हमारे रस्मों रिवाज, रिवायात, ये सब जो हैं intersubjective में आती हैं, क्योंकि ये हम collectively मिलके बनाते हैं, ठीक है? But they are not material things, but they have really, I mean, जो उनकी existence है उसमें कोई doubt नहीं है, क्योंकि उनकी existence जो है वो हमारा behavior जो है बहुत ज़्यादा constrain करती है, enable भी करती है। जैसे language है, language के आप देख सकते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आप कल्चर के भी देख सकते हैं कि उसके, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस से डिनायल जो है वो मुश्किल है कि भाई लैंग्वेज कोई चीज़ ही नहीं होती, या कल्चर कोई चीज़ नहीं होता, या ट्रेडिशंस कोई चीज़ नहीं होती, या लॉ कोई चीज़ नहीं होती, या एथिक्स और मोरालिटी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब चीज़ें होती हैं और ये बड़ी रियल होती हैं, दे आर वेरी मच रियल, दे आर नॉट अनरियल, दे आर मच वेरी रियल, बिकॉज इस पे इंसान की लाइफ और डेथ भी डिपेंड कर सकती है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है? जज ने कह दिया गिल्टी है, जज ने कह दिया नॉन गिल्टी, तो वो एक आदमी की लाइफ उस पर डिपेंड कर सकती है, ठीक है? सिर्फ दिस नॉन टेंजिबल थिंग लाइक अ सेंटेंस उस पे। तो ये हाबरमास की ये 3 वर्ड्स हैं। अच्छा, इनको अगर आप कंबाइन कर दें, ठीक है, तो यू गेट 4 वर्ड्स। यू गेट दिस ऑब्जेक्टिव मटेरियल वर्ल्ड एक होगी हमारे पास, सब्जेक्टिव मेंटल वर्ल्ड दूसरी होगी, इंटरसब्जेक्टिव तीसरी होगी, या सोशल वर्ल्ड आप इसे कह सकते हैं, सोशल, ठीक है? ये इंटरसब्जेक्टिव का दूसरा नाम आप रखते हैं सोशल। सोशल और सोशल के अलावा भी और बहुत सारे लेबल इसमें आ सकते हैं, ठीक है? कल्चरल, सोशल, कल्चरल वगैरह। और मैथमेटिकल एक चौथी वर्ड होगी। नाउ ये जो रिलीजियस लोग होते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, they also believe in a spiritual world, which I say is a spiritual world, which is different from all these words. Again, it's they really believe in its existence. और उसके अंदर जो entities होती हैं, things are like angels, God, heaven and hell वगैरह वगैरह, ये spiritual world के अंदर आती है, ठीक है? अब हाबरमास जो है, हाबरमास उसको जो है इंटरसब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर रखेगा इस कॉन्सेप्ट में। वो कहेगा ये जो रिलीजन के जितने भी नोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंटरसब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर ही है, ठीक है? So the religion is part of the intersubjective world. And Roger Penrose will say कि ये subjective और intersubjective और spiritual ये तीनों जो हैं ये mental world के अंदर है, ठीक है? These all they all belong to this mental world, ठीक है? उसी की different forms हैं, but we can very easily see कि नहीं, subjective और intersubjective world में difference है, और क्योंकि intersubjective world जो है वो independent है of one person, और subjective world जो है वो it's totally dependent on one person, it's not different. तो ये जो है इसकी अगर आप बात करते हैं religion की, तो Muslims definitely believe in the spiritual world, बल्कि उनके ख्याल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही जो है वो बाकी सारी वर्ल्ड्स जो है उसके अंदर ही आती है, ठीक है? They most Muslims, I think this is my, at least my understanding of most Muslims that I've met, that they believe that another Christians also, I think I have met some Jews, but I have not met any Orthodox Jews. So I've met very liberal kind of Jews, very good friends, but they don't believe in the spiritual world at all. Those kind of Jews. And I have also met some people who are atheists,
वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, they also don't believe in spiritual world at all. ठीक है, तो this is how things are at the moment. So I don't know आपका सवाल किस हद तक आंसर हुआ इसमें, but this is these are from two major philosophers, Roger Penrose and Habermas. Any other question regarding ontology? आपके जहन में कुछ questions आने चाहिए जो I'm expecting but you're not asking them. Any question that comes to your mind, Ms. Wak? सर आपने जो है शुरू में सवाल किया था एक है ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें अगर पॉसिबल है। वो मेरा मकसद यही था कि whether you believe in realism or idealism or something in between, या both of them, या what is your perspective, ontological perspective? What do you think कि आपका अपना पर्सनल क्या ख्याल है कि क्या नेचर है रियलिटी की that you see around yourself? ठीक है, you obviously reality से आप familiar हैं, ठीक है, you know कि what is real and what's not real, ठीक है, you can distinguish between real and not real. तो जो रियल चीजें हैं उनकी नेचर के बारे में आपकी क्या ख्याल आते हैं? आप क्या समझते हैं कि जो रियल चीजें हैं उनकी नेचर क्या, what they are made up of, what they really are, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो philosophers हैं they have been thinking about this, ठीक है, और माइंड का जो है रोल बीच में आ ही जाता है, ठीक है, जैसे कांट जो बहुत ही मेजर फिलोसोफर है, वन ऑफ द मोस्ट मेजर एंड इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स, Immanuel Kant. So he classified things in as they are in themselves. यानी कि ये हम इंट्यूटिवली ये हमें आसानी से हम समझ जाते हैं कि भाई अगर कोई चीज है तो वो उसका अपना जो बिल्कुल ही इनहेरेंट एक नेचर होगा वो होगा, लेकिन कैन वी एज ह्यूमन एक्सेस दैट डायरेक्टली? उसकी जो इनहेरेंट नेचर है उस चीज की, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पर ये पेन है मेरे हाथ में, तो इसकी जो परसेप्शन बन रही है मेरे दिमाग के अंदर एक शेडो बन रहा है, एक मॉडल बन रहा है मेरे दिमाग के अंदर अबाउट ऑफ दिस पेन, और वो मॉडल जो है वो बेस करते हैं ऑन द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ दिस पेन, ऑन द वेट दैट आई फील, ग्रेविटी का जो वेट मैं फील कर रहा हूँ अपने हैंड में, और जो उसकी रिजिडनेस है, और जो मुझे अपनी जो मेमोरी के थ्रू मुझे पता है कि ये इसका इस्तेमाल क्या होता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो हैं मिलके एक मेरे दिमाग के अंदर एक इसका आप समझ लें कि एक इमेज बना रही है, एक इसका मॉडल बना रही है, ठीक है, देयर इज अ सिमुलेशन हैपनिंग इनसाइड माय माइंड अबाउट द रियलिटी दैट आई सी अराउंड माय सेल्फ। तो वो जो सिमुलेशन है और जो एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है, उसका आपस में क्या ताल्लुक है? हाउ कैन वी गारंटी कि जो हमारा अंदर जो सिमुलेशन हो रही है हमारे, वो एग्जैक्टली वही है जो रियलिटी इन इटसेल्फ है, ठीक है। तो कांट ने इस तरह से ये जो है डिस्टिंग्विश किया था कि थिंग्स as they are in themselves and as they appear to us, ठीक है, तो उसने ये दो डिस्टिंक्शन की थी कि थिंग्स as they appear to us, थ्रू अपीयर का मतलब है थ्रू ऑल आवर सेंसेस, वेदर जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसकी, हम स्केल पे रखें इसको, हम इसका जो है अगेंस्ट द मीटर इसको, इसकी लेंथ को मेजर करें, या इसका जो है प्राइस देखें, हम जो भी हमारा सिमुलेशन है या मॉडल है हमारा माइंड का, वो डिपेंड करता है ऑन आवर सेंसेस, ठीक है, जो सेंसेस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, वो डेटा जो है वो हमारे माइंड में उसका एक समझ लें एक काउंटर पार्ट, एक मेंटल काउंटर पार्ट, ठीक है, तो एक मटेरियल वर्ल्ड है, उसका एक काउंटर पार्ट हमारा मेंटल काउंटर पार्ट बनता है उसके दिमाग के अंदर,
लेकिन what is the correspondence and how do we guarantee कि जो thing in itself है और उसका जो मॉडल बना है हमारे माइंड में वो बिल्कुल सही तरह से मैच कर रहे हैं, ठीक है, उसकी उसकी क्या गारंटी? and is there, are there things जो कि इन सेंसेस से, हमारे सेंसेस से इंटरेक्ट नहीं करती किसी भी तरीके से, ना उनका, ना लाइट से इंटरेक्ट करती हैं वो, ना ग्रेविटी से इंटरेक्ट करती हैं, ना वो किसी और मटेरियल से किसी तरह से इंटरेक्ट करती हैं या रेजिस्टेंस शो करती हैं किसी भी तरीके से मैटर को। तो वो जो है वो उनको वो अननोएबल ऑब्जेक्ट्स कहता था, ठीक है। एक तो एक अननोन ऑब्जेक्ट्स है और एक अननोएबल ऑब्जेक्ट्स है, जो जिनके बारे में हम पता नॉलेज हासिल ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड नॉलेज। So these are different perspectives on ontology, और जो क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं मुझसे अभी तक, वो क्वेश्चन है जी। एक चीज और ये थी कि ontology की जब हम बात करें तो we're talking about our beliefs, right? How we, how researchers thinks about certain things before it starts his research. What is already there, right? So जैसे अभी हमने बहुत सारे different concepts discuss किए, they have very contrasting, you know, basis behind them. So in if a researcher, if two researchers are researching on the same topic but have a different starting point and come to like ट्रू स्टेटमेंट्स, फिर उस पॉइंट में जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर लाइक, जैसे फॉर अ क्वालिटेटिव रिसर्च, लाइक जैसे आपने कहा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो वी ऑलरेडी हैव लाइक सर्टेन थिंग्स के ये प्रूफ हुई हैं एंड नोबडी विल काउंटर दैट, बट इन दिस सेंस इस पॉइंट पे व्हेन वी हैव डिफरेंट व्हेन द रिसर्चर स्टार्ट्स ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, तो फिर उस पॉइंट पे फिर ट्रू स्टेटमेंट्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे? Like it's still, I think, a discussion जी, on this. I think it's a very interesting question, and it's also related to, I think, what I think you should be thinking at this point. जो मैं कहता मैं expect कर रहा हूँ उससे ये मिलता जुलता ही सवाल है, और वो ये है कि इसका इस साइड डिस्कशन का जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्या ताल्लुक बनता है, ठीक है? What is the link of all this discussion with research methodology? And I think your question points to this link कि जो researcher होते हैं they have to have an ontological perspective. जो मैंने भी कहा कि it is not possible for any one of us to not to have an ontological perspective. We must have some beliefs about the reality that is around us. ठीक है, हमें ये जो अभी 5 वर्ड्स की हमने बात की है उसमें से हमारा कहीं ना कहीं तो बिलीफ होगा ना हमारा, कि हम किस इनमें से कितनी वर्ड्स में बिलीव करते हैं। सब में बिलीव करते हैं, एक में बिलीव करते हैं, दो में करते हैं, किसी में नहीं करते। वी मस्ट हैव सम, कहीं ना कहीं हमारी हम कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड करेंगे इसके ऊपर कि हम कहाँ पे, वेयर डू वी। तो रिसर्चर्स जो हैं इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स, स्पेशली कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं आजकल या डेटा साइंटिस्ट होते हैं, दे डू रिसर्च विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि उनका अपना ऑन्टोलॉजिकल स्टांस क्या है, ठीक है? बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ हैव वन स्टांस, ठीक है, और उसके ऊपर वो फिर उसको क्वेश्चन किए बगैर जो है दे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दे डोंट क्वेश्चन, नंबर वन, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. Number two, they don't question that. If they're not aware, so they won't be able to question it. Again, we have to be, although we have a stance, sometimes we are not aware or consciously aware of it, but we should be aware to be a good researcher. जैसे आप कह रही हैं कि अगर हम we are not aware और हम एक particular perspective से शुरू होते हैं और अपना statement produce कर देते हैं at the end of the research, तो we don't know कि हमारा जो है उसको if there are any alternative point of views or not to this statement, and that's all. So it's important to
be aware of this. और हम अभी next class में maybe we will look at examples जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये चलता है. तो वो there is a positive, there's a dominant paradigm in research these days. बिल्कुल एक simplistic statement दे रहा हूँ मैं, it's not a very accurate statement. लेकिन जो dominant है वो sort of objective, material kind of perspective है, वो ज़्यादा prominent है, ठीक है? Which means the quantifiable reality जो होती है, या anything that is quantifiable, या quantifiable अगर नहीं भी होती तो हम जबरदस्ती quantify कर देते हैं उसे, ठीक है? So that type of research is more prevalent, ठीक है? आपको quantitative type की research जो है, वो ज़्यादा नजर आएगी. And we'll talk about other type of research also in the next class. अभी we were just discussing one term. और हमने दूसरी terms भी इस्तेमाल की हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत implicitly, and maybe in the next class we'll take them apart and see कि हमने किस तरह से वो बाकी terms जो हैं, जो 3 terms थी, वो हमने किस तरह से इस्तेमाल की आज की discussion में. But if you go to your LMS, you'll find that there are some papers available to you for reading, ठीक है? तो next class में आप वो papers जो हैं, I think उस folder का नाम announcement में दिया हुआ है, I'm forgetting the name of that folder. Overview के अंदर 2 papers हैं, तो वो आप पढ़ के आएं. और उसमें करना ये है कि अब वो आप लोगों ने जो है उसको प्रेजेंट करना है और डिस्कस करना है कि ये पेपर के अंदर लिखा हुआ था और मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है और दिस इज हाउ आई थिंक दिस, ठीक है? तो वो क्लास जो है, वो नेक्स्ट क्लास जो होगी, वो आप लोगों की डिस्कशन पे ज़्यादातर बेस करेगी. और आई विल इंटरजेक्ट फ्रॉम द साइड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट वन ऑफ यू will start the discussion, and then another one of you will continue that discussion, and इस तरह से फिर हम सब अपना बारी-बारी will take part in that discussion and discuss one paper, and then we'll do the same for the next paper, right? So that's all for today from my side. If you have any other comments or question, you can definitely ask me or make your comments right now. So that's all for today. Thank you very much, and don't forget to type in your names before you log off. Okay, Okay, thank you, Jim Lapis. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Okay. Allah Hafiz.